See, I was just looking into this trigger. Let me let me tell you what is the purpose of this trigger, and then what will be the best approach. Whether we should create this or not. This trigger is all about synchronizing the changes what is that happen in the account to the related contact. That means if you change the account's phone number, the same should be get copied to the contact's phone. If you change the account's fax field, the same should be get copied into the related contacts fax field. In the same way, the billing address and shipping address and whatever, they must be copied into the related contact, respective contact fields. So, although there is no, there's no harm in learning this with the trigger, but let me tell you, you know, this can be easily done with the process builder, even though we have done it. Let me show you that also. So we also have done this before. So I was just thinking that there is no need to write down the trigger for this. If because see, the what is the recommended thing is like if something can be done with the process builder or with the validation rule or something else, we should do it from that, right? So let me show you that probably we also have created a process builder for the same. So if I go to this process builder, see what we have done. In the past, I think we already have created a process builder. Create related contact for the account. See, this one is the process builder. Let me see. Let me clone it. And I am cloning it because I wanted to perform the editing on this. So check for the status of account. If the account is active, status yes. Then what we are doing, we are actually we are copying. We are copying. Uh, these are the contacts field, right? These are the contacts. So what we are doing, we are by making this accounts id to be get transferred into id, we are making it a related contact. Now in the same way, what we are doing, we are copying the fax of account to the business fax of contact. We are copying the billing city to the mailing city. So that means we already have implemented this. Moreover, if something can be done with the non-coding, so there is no need to write down the code for that, right? This can easily be achieved with the process builder. So that is my recommendation. I will be teaching you this, and I will be teaching you from this year only. I will be teaching you how this trigger is actually working. But my opinion is like if something can be done with non-coding, there is no need to write down a trigger. Why? Because see, first of all, it's not just a matter of writing trigger. Actually, we require अभी इसके बाद में मैं अभी trigger handler class लेने वाला हूँ. And then you will be understanding कि ये जो logic होता है ना अपना trigger का, this whole logic. Now we will be shifting this into a class. We will be shifting this into a class. We will making this trigger something called as trigger logic less trigger. तो when अभी एक्चुअल कोडिंग कैसा होता है वो मैं आज ही आपको सिखाने वाला हूँ. ठीक है. एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू लर्न रादर देन दिस प्रोग्राम. तो अभी कैसा ना आपको पता चलेगा कि फॉर अ ट्रिगर वी whenever we write down a trigger, what we do usually is first of all we write a trigger, a logicless trigger, and then we write a class. We shift all this logic into a class. Whatever is the logic, we are going to shift that into a class. So first is trigger, second is class, and then we also require to write down the test classes for that. You know, these are the reasons why we actually do prefer. If something can be done with the business automation tool, whatever you have in the Salesforce, so please don't write down the trigger. Okay, let's understand how this trigger is actually working. Let's understand how this trigger is actually working. See, so this trigger with the name prevent con. Okay, we already I have created in the past with the triggers with the same name. I created a trigger. So what I'm doing is like I'm actually copying the same code over here. तो चलो वो तो आपको पता है कि trigger whatever is the name of trigger on the account, and when we want, whenever any updation has been happened, whenever any updation, okay, here I could even insert, after insert भी कर सकता हूँ मैं इसको, after inserting and after updating for both of the event, you know is after and is update. ठीक है. So here we can even if we want we could even ask it for after insert operation also. So if you are either inserting, if you are either inserting or you are updating, one of the contact record would also be get created. One of the contact record would also be get created. That is what we are to synchronize the account with the related contacts phone.
and there must be some of the account phone fax. यहाँ पे एक field add करना पड़ेगा मेरे को. This program exactly is working or not. Let me see. So if the trigger is after and then trigger dot is update or trigger dot is insert. So whether it's an insert operation or it's an update operation. Okay. Now this trigger will going to work for both of the cases. Chetan, there is no need to on your video. Okay. So what I was saying is like I'm making modification in the event that this trigger is going to fire even if you are updating a previous record or rather if you are inserting. So after insert after update trigger है हमारा. This one is an after trigger. Accordingly मैं bulkification कर रहा हूँ यहाँ पे. So if trigger dot is after first of all and yes. So this trigger is working for that event. Now what I'm doing with this query is like, I am getting the related contact based on the account. Because see, we don't okay, after insert की जरूरत नहीं थी शायद यहाँ पे. After insert no. हमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसी पर करना है ये. सो वी डोंट रिक्वायर दिस इवेंट. इसकी जरूरत नहीं है हमें. ठीक है, वी एक्चुअली डोंट रिक्वायर दिस. ठीक है, इतना ही कोड रहेगा. जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, जो एग्जिस्टिंग अकाउंट के साथ रिलेटेड कॉन्टैक्ट है ना, उसी पे अपने को काम करना है. ओके ओके. जैसे यहाँ पे व्हाट वी वांटेड टू वर्क, ऐसा कोई अकाउंट जिसके साथ रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये उसी पे काम करेगा. तो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर इज लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ट्राई टू सी कि हमको ऐसे कॉन्टैक्ट्स को फेच करना है दैट आर रिलेटेड टू अकाउंट. ठीक है, सिर्फ वही कॉन्टैक्ट जिनके साथ जो अकाउंट के साथ एसोसिएटेड हो. तो अकाउंट आईडी नाम की एक फील्ड होती है कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में, दैट यू नो किसी भी कॉन्टैक्ट में अकाउंट आईडी नाम की फील्ड होती है. ठीक, और ये सेम कोड मैंने इसके पहले भी इसके जो प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था, है ना, इन दैट प्रोग्राम आल्सो आई हैव यूज दिस सेम पर्टिकुलर कोड. क्या आप कांटेक्ट दीजिए मुझे, लेकिन सिर्फ सारे कांटेक्ट मत दीजिए. प्रिसाइजली जस्ट गिव मी दोज कांटेक्ट दैट आर रिलेटेड विद द अकाउंट, दैट आर रिलेटेड विद द अकाउंट, है ना. तो अकाउंट आईडी आई वाज ट्राइंग टू फाइंड इट इनटू व्हाट, अकाउंट आईडी आई वाज ट्राइंग टू फाइंड इट इनटू दिस पर्टिकुलर मैप कलेक्शन. Now here also the same thing I'm following. Here also the same thing I'm actually following. So whenever it's about update operation, whenever it's about update operation, we have seen that I have given you one of the table के insert में ये trigger dot new या फिर trigger dot old, ये सब कब use होता है. So when it is insert and update operation, either it is insert operation or it is an update operation, then the kind of memory internally what is used is trigger dot new या फिर new map. New is a list collection, new map is a map collection. So I am actually, I'm writing this query to get the fields of contact. These all are the fields of contact: ID, first name, last name, phone, fax, and then account ID, mailing street, and everything. Whatever is mentioned over here: phone, fax, mailing street, and these all fields. I'm getting the value of all these fields. From which object? From the contact object. But I don't want every field. I rather wanted only those contact records that are related to account. And so I am actually looking for what? I'm looking them into this particular map collection of account. Okay, that is what. Now if this collection where I have received this all record, if it is not empty, this is one of the best practices we know. Now let's apply the kind of automation. So we are fetching each and every contact records from this particular collection. We are making them to be get stored inside this particular variable con. And then what I am doing actually, now I am actually no, I'm actually trying to map contact according with the account. So the account's phone field will going to be get copies into contact phone, account fax will going to be get copied into fax, and then billing street and everything. I created a variable of the account with respect to that variable. Like ACC is a variable of account, right? With respect to that variable, I'm actually fetching the details of these all fields of the account object, and simultaneously, what I'm doing, I'm actually storing it. I'm actually storing into the related, contact variable.
So that is what the code. It's a pretty simple code. But then, and after you may update TML operation, of course. But then there is no need to write down this code. If this is your use case, don't go with this. Don't go with this. It can easily be done out. It can easily be done out with your process builder. This we already have learned, right? It can easily be completed with the process builder. There is no need to write down this thing. Okay, but still, for just for having a practice, go with this program. Okay, just to have one more practice on the triggers, just go with. And I'm giving you one assignment also. Let me give you one assignment. Try to implement the roll-up summary functionality between account and contact using triggers. Okay, this one is an assignment. You could definitely go and Google the code, and then accordingly you will find it and just try with this. What I'm asking you to create a roll-up summary functionality between what account and contact. Do you know something that you probably know this, that roll-up summary is I mean, if you wanted to create a roll-up summary, what kind of relationship? There must be a master detail relationship, right? So if it's a lookup relationship, obviously we cannot create it. Although there is one lookup relationship between account and opportunity is one of the lookup relationship where you could create roll-up summary. So if I'm giving you this program, if I'm asking you to construct a roll-up summary between account and opportunity, that could be done. But for the account and cases, for account and cases and for account and contact, there is a lookup relationship. And here we cannot create roll-up summary. Here we cannot create roll-up summary because for creating a roll-up summary, the relationship must be what? Master detail. And moreover, I am not asking you to convert this relationship. It cannot be done. This is a default, this is a default lookup relationship. This is a default standard lookup relationship. You cannot change it to master detail. Nor even I wanted you to create a separate master detail relationship. What I'm asking you just to implement this functionality, that if I go to any of the account, what's my question is all about. If I go to any of the account, for example, if I open Grand Hotel and Resort, I must have one of the field over here. I must have one of the field over here. For example, you create a field, go to the account object and then create a field number of contacts. You know what I'm asking you? Create a field number of contact. And what should it have? जैसे यहाँ पे दो contact, it should have this functionality. 2 number of contact associated with this account, something like this. Create a field, create a custom field inside this account object. Go to this account, create a new field. What kind of field? Text field, number field, whatever you wanted, number field. But because roll-up summary you cannot create, so I'm asking you to create a number field. That's a number field. What will be the label? Number of contacts associated. Okay, this is what I'm asking you to create. Don't make it required. Make it visible for everybody. So, okay. So now if I go to the account, if I go to the account, if I open any of the record, for example, Grand Hotels and Resort, is that. Then bring up that field over here. Number of contacts is already over. So what I'm asking you to do is like, is that field here. Why I'm not able to locate it? Oh, here it is. Okay. Anyways, so this is the field. See, what I wanted you to do is like, here I should get the value of count. यहाँ पे मेरे को ना कांटेक्ट की यहाँ पे if there are two contacts, तो यहाँ पे मुझे 2 आना चाहिए. If there are 3 contacts, here I should get 3. This is what I am. So first of all, create a field like this. Go to your account object and create a field like this. And now I wanted you to update the account accordingly. So here, to implement this functionality, to implement the functionality of roll-up summary, you actually require to write down a triggers.
Now, how to do that? This one is an assignment for every one of you. Okay, this one is an assignment. Now, let's move on to the next thing, something called as trigger handler factory. Trigger. See, in the real time, whenever we write down a trigger, whenever we write down a trigger, like we have written so many triggers. Okay, this one is on the lead object. Let me try to open this trigger first of all. So I'm going to the developer console, clearing everything. My mic is on. Please take care of your mic sometime. Mute this. Who's this? Swale. Lead trigger. Okay. See, guys, this one is a trigger. This one is a trigger which we have created it on the lead object. We have created this onto what? The lead object. Now, in the real time, in the real time, we never write down the complete code inside trigger itself. We never write down the complete code in the trigger itself. What I will be doing? I will actually, I'll be transferring this whole business logic. This is my business logic. This one is my business logic, right? I will be creating a class. I will be creating a class, and then what I'm going to do, I'll be transferring this. I'll be transferring this, this whole business logic into a separate class. This whole business logic, I will be transferring this into what? I'll be transferring this into a separate class. Let me show you that. We have like we have created it for account also. Let me try to open the trigger of account. So this is also one of the trigger that we have created. And then we have few of the business logics. Now, I have two separate business logic. I have two separate business logic. One is for this one for the delete, and then if I created this, तो ये भी एक उसमें add हो जाता था आज अगर मैं बनाता तो this will also be getting updated. But anyway, चलो तो मैं क्या करता हूँ? What does trigger handler factory actually means? Trigger handler factory का meaning क्या होता है? Trigger handler factory is first of all a class. It's a class. एक general class होती है. ठीक है? It's just like a class. And it is used to store the logic of your trigger. ठीक है? And we are going to call it from the trigger. Let's see how. इसकी क्या advantages हैं वो सब भी हम discuss करने वाले. First of all, understand this. So I'm creating a new class for account. Okay, let me go with the account for example. Okay, see this. For the account trigger, I'll be creating a handler class. Okay, I'm creating a handler class. So the naming convention, the first of all, naming convention. Okay. It is what? The trigger name is account trigger. Account trigger handler. Account trigger handler. See, the name of trigger is account trigger, and this one is a handler. So this is the usual naming convention what we usually follow in the real time. Real time पे जब भी हम करते हैं ना triggers बनाते हैं उसका handler ऐसे लिखते हैं. Let me try to show you that also. So this is the sandbox thing. ये one. See, account trigger handler. See, this is how. That is the same thing I'm mentioning you. The way I used to write down it in the real time, in the same way I'm actually teaching you. Account trigger handler. Then I have like, let me try to show you. Matching trigger. There's an object called as matching. I created a trigger on that. That trigger name is matching trigger. Now this class name is what? It's a matching trigger handler. So the naming convention, what I am actually teaching you is basically real time. So this class I'm making this class I am actually creating it as a handler class for the account trigger. And so I have given this name as what? Account trigger handler. Right? Account trigger handler. So what I wanted over here, I just wanted to shift this whole business logic. There are two separate business logic for insert and update and for the delete operation. Right? There are two separate business logic. Okay, so first I will be shifting this. First I will be shifting this. Okay, first I will be shifting this. तो मैं इसके लिए तो अब यहाँ पे आता हूँ मैं यहाँ पर फिर मैं एक method बनाता हूँ. This is my class. I'll be creating a method over here. Public static and then void. Okay, public static and void. Now let me give the name to this method. So this operation is what? You tell me. This operation is what? It's a before operation. Before insert and update. What is this kind of operation? This operation is before is the event and then insert and update.
if there is an insert operation or there is an update operation, this is the business logic that is going to be get executed, right? So for this business logic, for this business logic, second, for this business logic, which is going to be get executed after before insert and update, I am creating a method. So what should be my method name? Again, see, what should be, I can give any name over here, but you know, I'm actually trying to give you that real-time experience, what how we actually give the names in the, you know, the actual methods we used to have it. So first of all, I'm giving the name has to be what? Has to be the name I'm giving it has to be the handle. Handle. What? What handle? You handle before. Before what? You handle before. Before what? Insert and update. You handle it before insert and update. ठीक है? This is my method. I could give any name. बार बार मैं यही बोलता हूँ. I could give any name, but try to give the name which is more significant. Try to give the name just by reading the name. You know, so I think ये and ऐसा नहीं लेगा. So let me like do it like this. Handle and this could be the reason. So ये रहा इसी वजह से आ रहा होगा. हाँ अब हट गया. हाँ तो वो एंड ऐसा नहीं ले रहा था, तो सिंबल नहीं ले रहा था, दैट्स व्हाई. नो हैंडल बिफोर इंसर्ट एंड अपडेट, ये एक मेथड बनाया मैं. दिस जस्ट आई हैव क्रिएटेड अ मेथड, है ना. आई क्रिएटेड दिस मेथड. चलो अब यहाँ चलो. अब एक चीज समझो आप, वेन एवर दिस इज गोइंग टू बी गेट कॉल्ड, ठीक है. अब जब ये जो मेथड, अब ये सारा जो लॉजिक है ना, आई जस्ट वांटेड टू शिफ्ट दिस होल लॉजिक, यू नो. आई वांटेड फ्रॉम हियर दिस होल बिजनेस लॉजिक, यू नो, फ्रॉम, let me from the second bracket. I just wanted to shift this whole business logic. And I just wanted to shift, that means I'm just cutting it from here. See what I'm doing, I'm just cutting it from the trigger. I'm just cutting it from the trigger, and actually what I'm doing, I'm just pasting it forward. Now I'll be pasting it over. I'll be pasting it over. The complete business logic, which was actually present over here. Now I have been, you know, I shifted this whole business logic to a class inside this method. Which method? Handle, insert and update, whatever. ठीक है, ये हो गया. अभी एक चीज समझो. What we want? We wanted, we wanted that this method of this class, we wanted that this method of this class should be get called over here. That is what we want. यहाँ पे आपका ये पूरा logic था. If I am not wrong, this complete logic, you know, this complete logic was present over here. What I did, I just cut it from here and I pasted over here, right? I pasted it over here. So what I want this class, this, let me copy this in the name of the method, name of the class, sorry, account triggers dot, account trigger dot which method, you know, I wanted which method, I wanted this method. I wanted this method to be get called, you know, I wanted this method to be get called. Okay, so I'm just pasting it over here. I wanted this method to be get called, this method to be get called, and this method, what it have the this complete logic. ये जो पूरा logic जो पहले trigger में था, that I have copy and pasted over here. Now if you have understood this, पहले आप इतना बताओ कि आपको इतना समझा गया, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. Please tell me yes or no what I have did, वरना मैं फिर से रिवाइज करता हूँ. आई एम मेकिंग दिस ट्रिगर लॉजिकलेस. मैं ट्रिगर को लॉजिकलेस बना रहा हूँ. दिस टाइप ऑफ ट्रिगर इज कॉल्ड एज लॉजिकलेस ट्रिगर, एंड आई क्रिएटेड अ हैंडलर क्लास फॉर दिस. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रिगर हैंडलर फैक्ट्री. और इन सिंपल ट्रिगर हैंडलर, इतना बड़ा कोई नहीं बोलता, फैक्ट्री वैक्ट्री कोई नहीं बोलता है. सिंपली इट इज कॉल्ड एज ट्रिगर हैंडलर. ठीक है. तो यहाँ ये जो पूरा कोड हुआ करता था, वो पूरा कोड मैंने एक क्लास बनाया जिसका नाम है अकाउंट ट्रिगर हैंडलर. उसके अंदर एक मेथड बनाई मैंने अकॉर्डिंग टू दिस. ये बिहेवियर को मैंने देखा कि ये बिहेवियर क्या है. बिहेवियर है बिफोर ट्रिगर और इंसर्ट ऑपरेशन और अपडेट ऑपरेशन के लिए काम कर रहा है. ठीक है. तो ये बिहेवियर को समझते हुए मैंने एक नाम दिया इसको, हैंडल करो. हैंडल करो. ठीक है. किसको हैंडल करो? हैंडल करो आप किसको? बिफोर टाइप का ट्रिगर जो कि इंसर्ट एंड अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करे, बस ये. और वो पूरा का पूरा लॉजिक जो यहाँ पे हुआ करता था, मैंने उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया. फिलहाल मैंने इतना किया है और कुछ नहीं अभी तक. आप बताओ पहले कि इतना समझा कि नहीं समझा. हम्म. सोहेल, शुभम रिप्लाई दिए, बाकी लोग ठीक है. किरण, हर्ष, ठीक है.
और बाकी लोग, दिव्या, ज्योत्सना, प्रज्वल, गाइस। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उमेश, उमेश, इतना यस क्लियर सर, है? समझा सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है, चलिए। चलिए, अब बिकॉज चलो इतना क्लियर हो गया है तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी लॉजिक है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसको टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे अब, ओके। अब देखो यार, एक चीज समझो, कैसा है, जब ये ट्रिगर कॉल हुआ, ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। जब ये ट्रिगर कॉल हुआ, तब ये ट्रिगर जब कॉल हुआ, तो ये इज बिफोर है, इंसर्ट परफॉर्म कर रहा है, अपडेट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे कैसा मामला था, अगर आप इस लॉजिक के अंदर जाते हो, ठीक है, इफ यू गो इनसाइड दिस लॉजिक, अगर आप इस लॉजिक के अंदर जाते हो, तो यहाँ पे मैंने दिखा ट्रिगर डॉट न्यू, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है ट्रिगर डॉट। अब प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है, ट्रिगर डॉट न्यू का जो अस्तित्व है, ट्रिगर डॉट न्यू का जो एग्जिस्टेंस है, वो ट्रिगर के अंदर ही होता है। यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड लिखने पे आपको एरर नहीं मिलता। लेकिन अभी आप किसी क्लास के अंदर ट्रिगर डॉट न्यू लिख रहे हो, तो आपको वहां पे एरर मिलेगा। उसके लिए ये कुछ नया है, उसको पता ही नहीं कि ट्रिगर डॉट न्यू क्या है। क्या एरर दे रहा है ये, यहाँ पे आप देखो क्या एरर दे रहा है ये बोल रहा है कि मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। वॉइड हैंडल बिफोर इंसर्ट में ट्रिगर अकाउंट ट्रिगर हैंडलर लूप वेरिएबल एक्सपेक्टेड हो एस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो तुमने क्या दे दिया मेरे को, तो वहाँ एस ऑब्जेक्ट चाहिए। मैं तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर से एक एक रिकॉर्ड उठाता हूँ लूप में, तुमने क्या तो भी देके रखा। तो ये एरर क्यों बोल रहा है, क्योंकि अपेक्स को क्लास के अंदर ट्रिगर का समझ रहा ही नहीं है, सो कि ट्रिगर डॉट न्यू क्या है, ट्रिगर डॉट न्यू क्या है उसको पता ही नहीं है, ठीक है। आप मेरे को बताओ ट्रिगर डॉट न्यू क्या है। एक कलेक्शन है, चलो बताओ कौन सा कलेक्शन है, लिस्ट या मैप। आप मुझे बताओ कि ट्रिगर डॉट न्यू क्या है, कलेक्शन है, कौन सा कलेक्शन है, लिस्ट कलेक्शन या मैप कलेक्शन, बताइए, बताइए। हाँ, किसी ने आंसर दिया है चैट में। हाँ, तो हाँ, शुभम, उमेश, जोशना सभी कह रहे हैं कि लिस्ट कलेक्शन है, बिल्कुल सही बात है। ट्रिगर डॉट न्यू जो है आपका वो लिस्ट कलेक्शन है, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहा हूँ। ट्रिगर डॉट न्यू को यहाँ से मैंने ये इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने कट कर लिया, इसको लाया इधर। कि अब जब तुम ये जब ट्रिगर कॉल हो रहा है, और उसके बाद में ये ट्रिगर जब कॉल हो रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर क्लास की इस मेथड को कॉल कर रहा है। तो इस मेथड को ब्लैंकली कॉल मत करो, साथ ही साथ एक वैल्यू भेज दो उसको। किसकी वैल्यू भेज दो, ट्रिगर डॉट न्यू की वैल्यू भेज दो, ठीक है। ये जब मेथड ये पर्टिकुलर मेथड जब कॉल हो रही है जो कि मौजूद है इस क्लास के अंदर, तो उसको ब्लैंक मत दो। भाई वो अपना मेहमान है, वो कुछ जा रहा है अपने घर से कुछ जा रहा है, तो उसको मिठाई का डब्बा दे के भेजो, ये ले ट्रिगर डॉट न्यू इज द मिठाई का डब्बा, ये अपने साथ लेके जा, ये लेके जा, ठीक है। अब ये मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है, ठीक है, ये मिठाई का डब्बा लेके आ रहा है, तो अब ये इसका देखो, ये इसका पैरामीटर है। अगर ये मेथड है, ये अपने साथ कुछ लेके आ रही है, क्या लेके आ रही है, ट्रिगर डॉट न्यू लेके आ रही है, तो उसको अपने को कैप्चर करना पड़ेगा, उसको अपने को कैप्चर करना पड़ेगा। ट्रिगर डॉट न्यू एक्चुअली है क्या, ट्रिगर डॉट न्यू एक लिस्ट कलेक्शन है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे लिस्ट। सबसे पहली चीज, ट्रिगर डॉट न्यू क्या है, एक लिस्ट कलेक्शन है। ये जो अपने साथ लेके आ रहा है ट्रिगर डॉट न्यू, ये एक लिस्ट कलेक्शन है, तो मैंने लिखा लिस्ट कलेक्शन। अब लिस्ट कलेक्शन में मुझे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा, तो ये डेटा टाइप क्या है, तो आप बताओ ये जो ट्रिगर फायर हो रहा है ये कौन से ऑब्जेक्ट पे फायर हो रहा है, अकाउंट पे। जो भी डेटा हम इंसर्ट इंसर्ट कर रहे हैं, जो भी डेटा ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर है, वो कौन सी ऑब्जेक्ट का है, इट इज ऑफ द अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो डेटा अपने साथ ट्रिगर डॉट न्यू ला रहा है वो कौन सी ऑब्जेक्ट का है, अकाउंट ऑब्जेक्ट। तो नाउ दिस बिकम लिस्ट ऑफ अकाउंट, दिस बिकम लिस्ट ऑफ अकाउंट। आप कोई नाम दो इसको, कोई भी एक नाम दो, जैसे कि एलएसटी अकाउंट, एलएसटी अकाउंट्स, ठीक है, एलएसटी अकाउंट, और कुछ देना चाहते हो तो वो नाम दे दो आप, जो भी है, ठीक है। अब ये वाला जो जहां पहले यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू था, ठीक है, देखो आप पहले यहाँ ट्रिगर डॉट न्यू था, मैंने क्या किया, ट्रिगर डॉट न्यू का पूरा वैल्यू यहाँ मंगवा लिया, ठीक है। अब ये वाला मेथड मेरे को यहाँ पे देने का है, ये नाम आई नीड टू पुट इट ओवर हियर, यहाँ पे मेरे को ये नाम देना, एलएसटी अकाउंट, एलएसटी अकाउंट, ठीक है। तो अब ये छोटा सा मॉडिफिकेशन किया मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर कि जब ये मेथड कॉल हो रही है इस क्लास के अंदर की, ये मेथड कॉल हो रही है, तो ये ब्लैंकली कॉल नहीं होगी, ये अपने साथ कुछ लेके जाएगी। क्या लेके जाएगी, इट विल गोइंग टू टेक द वैल्यू ऑफ ट्रिगर डॉट न्यू,
एंड दैट आई एम कैप्चरिंग इट बिकॉज वो ट्रिगर डॉट न्यू इज अ लिस्ट कलेक्शन। अगर न्यू मैप लिखता तो यहाँ मुझे मैप कलेक्शन देना पड़ता था, लेकिन वो क्योंकि न्यू है, ट्रिगर डॉट न्यू इज अ लिस्ट कलेक्शन, तो इसका पैरामीटर क्या लिखा मैंने, ट्रिगर डॉट लिस्ट कलेक्शन लिस्ट ऑफ अकाउंट विद दिस नेम। ठीक है, अब देखो सारे एरर्स हट गए। अब यहाँ से एक एक अकाउंट में जाएगा और फिर जो कुछ भी होना था वही होगा, जो ट्रिगर करता था वही करेगा। अकाउंट की इंडस्ट्री अगर ब्लैंक है या नहीं दिया उसने, तो उसके मुंह पे एरर फेंक के मारो, अरे भाई इंडस्ट्री की वैल्यू सिलेक्ट करो। ये काय का ट्रिगर था, ये कुछ फील्ड्स को मैंडेटरी बनाने वाला ट्रिगर था ये, राइट। तो अभी वो ट्रिगर, ट्रिगर में तो कुछ नहीं बचा। ये जो ट्रिगर है, अगर आप सिर्फ इतना कोड देख रहे हो अभी फिलहाल, नीचे का मत देखो, तो दिस ट्रिगर बिकम्स अ लॉजिक लेस ट्रिगर। ऐसा ट्रिगर जिसका लॉजिक नहीं होता, जिसका लॉजिक कहीं ट्रांसफर किया जा चुका है, वो ट्रिगर कहलाता है लॉजिक लेस ट्रिगर। और उसका लॉजिक जहां मौजूद रहता है उसको हैंडलर क्लास बोलते हैं। नाउ लेट मी एट अ टाइम सेव दिस टू थिंग्स। ठीक है, दोनों चीजों को सेव करता है, कोई एरर नहीं रहेगा, बोथ ऑफ देम विल गोइंग टू बी सेव। ये है रियल टाइम की कोडिंग, दिस इज द रियल टाइम कोड। अभी एक और बचा, ये बिजनेस लॉजिक पे ट्रांसफर करता हूँ। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हम चाहें तो यहाँ पे लॉजिक लिख सकते हैं जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप ऐसे ट्रिगर बनाओगे तो इनका टेस्ट कवरेज नहीं मिलता है, इनका टेस्ट कवरेज नहीं मिलता है। अभी हमारा ठीक नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट क्लासेस। आपको पता चलेगा कि आप जितनी भी क्लासेस बनाते हो उसका कवरेज आना चाहिए मिनिमम 75%। ठीक है, और जितने भी आप ट्रिगर्स बनाते हो, जिसके आप ट्रिगर्स बनाते हो उसका मिनिमम टेस्ट कवरेज क्वालिटी कोड शुड बी 1%। बिना 75% और 1% अचीव किए आप इस कोड को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते, आप इस कोड को प्रोडक्शन पे डिप्लॉय नहीं कर सकते। एक चीज और सुनिए, आप देखिए, हम लोग जब भी काम करते हैं तो वी नेवर वर्क ऑन द प्रोडक्शन। मैं बार बार बोलता हूँ ये आप हमेशा याद रखें, वी ऑलवेज वर्क ऑन सैंडबॉक्स, वी ऑलवेज वर्क ऑन सैंडबॉक्स। ये देखो आप, मैं काय में काम कर रहा हूँ, मैं हूँ कोडिंग। हु इज दिस यार, गाइस प्लीज टेक केयर ऑफ योर माइक। ठीक है, मैं फ्लो में रहता हूँ, फिर कैसा ना एक छोटी सी चीज से डिस्टर्ब हो जाता हूँ। ओके, व्हाट आई वाज सेइंग, whenever if someone asks you in the interview कि on which environment you work, always say we work on the sandboxes। हम हमेशा सैंडबॉक्सेस में काम करते हैं। एंड देन सी सैंडबॉक्स से उसको लेके जाना पड़ता है प्रोडक्शन पे। सैंडबॉक्स पे आप जो भी बनाते हो ना, वी नीड टू डिप्लॉय दिस ऑन द प्रोडक्शन। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन द डिप्लॉयमेंट। सबसे आखिरी में यही पढ़ाने वाला हूँ। अब ये जैसे डेवलपमेंट खत्म होता है, इंटीग्रेशन लूंगा, इंटीग्रेशन के बाद डिप्लॉयमेंट लूंगा। मैं आपके दो टेक्निक से डिप्लॉयमेंट सिखाऊंगा आपको, चेन सेट से और दूसरी एक और टेक्निक है, दोनों से सिखाऊंगा मैं डिप्लॉयमेंट कैसे करना। बट एनीवे, अभी आप सैंडबॉक्स पे काम करते हो, सैंडबॉक्स से प्रोडक्शन पे डिप्लॉय करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। वो ये होता है कि इफ यू हैव डेवलप अ क्लास, अगर आपने कोई क्लास बनाई है, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव डेवलप अ क्लास, तो क्लास का मिनिमम you should have 75% of the code coverage, your entire code। if you have 100 lines of code, your 75% of that code should be your quality code, then only that class could be deployed। if you have created a trigger, so only 1%, but 1% should be your quality code। If you don't maintain this much of quality, you cannot deploy this to the production। That is a rule। We will be learning this in the deployment में, यही दिखना है आपको कि what is a rule of deployment, how much code coverage are required individually for the class, and then for combinedly how much it's required, how to create the chain sets and everything we are be learning in the process। वही प्रोसेस रहेगी अपने डिप्लॉयमेंट, यही सब सीखने वाले हैं। तो अभी क्या होता है, लेट मी टेल यू दिस कि देखो यार, अगर आप ट्रिगर इस तरह से बनाओगे ना, जैसा इसके पहले हमने बनाया हुआ ये वाला ट्रिगर जहाँ पे हमने लॉजिक उसके अंदर लिखा है, वी कैन नॉट, है ना, वी कैन नॉट अप्लाई द टेस्ट केसेस ऑन टू दिस टाइप ऑफ ट्रिगर। अगर आप ऐसा ट्रिगर बनाते हो, अगर आप ऐसा ट्रिगर बनाते हो वेयर द लॉजिक इज देयर इनसाइड द ट्रिगर, ट्रिगर के एग्जीक्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए टेस्ट केसेस नहीं लिखी जा सकती, और टेस्ट केसेस नहीं लिखे जा सकते मींस इसका कवरेज नहीं निकाला जा सकता। इसका कवरेज नहीं निकाला जा सकता मतलब इसको डिप्लॉय नहीं किया जा सकता। अब आप बताओ इतनी मेहनत करके फायदा ही क्या when you cannot deploy this code to the production। that is the reason in real time, in real time triggers, in the real time, in the real time, फिर से सुनो, in the real time triggers are always logic less trigger। the entire logic for every trigger we always create a handler class। For every trigger, we always create a handler class and then we create the test classes of it। Now let me show you this। चलो, तो देखो, मैं ट्रिगर दिखाता हूँ आपको। ठीक है, WC, see, these are my triggers। ठीक है, let me close everything, let me close everything, सारे क्लोज करता हूँ। See, I created few of the trigger। जैसे मेरे ट्रिगर का नाम है अकाउंट ट्रिगर। ठीक है, दिस इज माई ट्रिगर।
डू यू फाइंड एनी लॉजिक ओवर हियर? ट्रिगर विद द नेम अकाउंट ट्रिगर किस पे क्रिएट किया? अकाउंट पे। कौन से इंसिडेंट्स के लिए? बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट ऑपरेशन। ठीक है, बिफोर इंसर्ट एंड बिफोर अपडेट ऑपरेशन। उसके बाद क्या किया? उसके बाद कुछ नहीं, हैंडलर क्लास को कॉल कर लिया मैंने, ठीक है। द सेम वे कॉन्टैक्ट ट्रिगर, कॉन्टैक्ट ट्रिगर, ठीक है, कॉन्टैक्ट ट्रिगर। द सेम वे मैचिंग ट्रिगर। सी ऑलवेज एवरी ट्रिगर इज लॉजिकलेस ट्रिगर, every trigger is logicless trigger. I am calling one of the class with the name handle, handler नाम की एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है on before insert update, और मैं क्या साथ में भेज रहा हूँ? मिठाई का डब्बा उसके साथ भेज रहा हूँ, ट्रिगर डॉट न्यू। तो ये जो मेथड होगी हैंडल, हैंडलर नाम की क्लास होगी, उसमें ऑन बिफोर इंसर्ट ढूंढने दो मुझको। हैंडलर, हैंडलर नाम की क्लास बनाई होगी, ABCDEFGHABCD, हाँ, हिस्ट्री, मैचिंग ट्रिगर और हैंडलर, ट्रिगर डॉट न्यू, मैचिंग हैंडलर, मैचिंग कंट्रोलर, मैचिंग ट्रिगर हैंडलर। सी, ये क्लास है। तो इसमें वो सारा कोड देखो, ये पूरा लॉजिक ट्रिगर का, ये पूरा लॉजिक है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट लॉजिक। इसको सेपरेट कर लिया, इसको एक क्लास के अंदर ले लिया, ठीक है, मैचिंग ट्रिगर हैंडलर नाम की क्लास, और यहाँ जस्ट उसको कॉल किया। दिस इज द रियल टाइम कोडिंग। तो रियल टाइम पे कोडिंग हमेशा ना इस तरह से की जाती है, इसीलिए मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि ट्रिगर्स जो होते हैं हमेशा लॉजिकलेस बनाए जाते हैं। वी ऑलवेज क्रिएट अ हैंडलर क्लास where this whole logic we shifted it to the handler class and we write down the test class for this handler class, और इसके लिए हम टेस्ट क्लासेस लिखते हैं। आई ऑल्सो हैव द टेस्ट क्लासेस फॉर दिस टेस्ट। ये देखो, जैसे टेस्ट मैचिंग ट्रिगर, ये मैचिंग ट्रिगर को टेस्ट कर रहा है, ऐसे ये अकाउंट ट्रिगर के लिए होगा। ये है क्लास अकाउंट की, ये आप भी बनाने वाले हो। @ इस टेस्ट से शुरुआत होती है हमेशा टेस्ट क्लास की, एक एक मेथड को पकड़ के अपन टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट जो बनाते हैं ना आप, वो हमेशा हैंडलर क्लास को बनाते हो। तो हमेशा जब अब ये सिखाऊंगा मैं आपको भी, तो ये जो क्लास बनाई ना मैंने, इसकी टेस्ट क्लास बनाऊंगा, इसकी टेस्ट क्लास बनाऊंगा, तो ये अपने आप कवर मिल जाता है, अपने आप कवर हो जाता है, ये ऐसा रहता है ये। तो आप ट्रिगर को डायरेक्ट कवर कभी नहीं कर सकते, आपको क्लास को कवर करना पड़ता है। आप क्लास का कवरेज लिखोगे तो ऑटोमेटिकली, आप क्लास के लिए टेस्ट टेस्ट यूज केसेस लिखोगे, ऑटोमेटिकली ट्रिगर कवर होता है। ये सीखने वाले हो अभी आप। यही रीजन है कि triggers in the real time are always logicless. The entire logic is being shifted into handler class. We write down the test class for handler. Triggers are automatically get covered. कैसे मैं सिखाता हूँ, पहले ये एक और है, इसको भी logicless कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसके लिए एक नई मेथड बनाता हूँ, ये है हमारा बिफोर, बिफोर डिलीट वाला, ठीक है। तो इसके लिए एक नया मेथड बनाते हैं। चलो भाई, एक मेथड तो अपनी बन के तैयार है। अब एक और मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ठीक है, क्या? हैंडल, हैंडल क्या? बिफोर डिलीट है क्या? बिफोर डिलीट है ना, तो इसका नाम देते हैं हम हैंडल बिफोर, DELET ना, हैंडल बिफोर डिलीट। अब ये अपने साथ क्या लेके आएगा, इधर से देखो आप क्या लेके आएगा बताओ। यहाँ से ट्रिगर डॉट न्यू जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है? ट्रिगर डॉट ओल्ड जाने वाला है। तो ट्रिगर डॉट ओल्ड जो है, ट्रिगर डॉट ओल्ड इज ऑल्सो अ लिस्ट कलेक्शन। ट्रिगर डॉट ओल्ड जो है, दैट इज ऑल्सो अ लिस्ट कलेक्शन, है ना। तो ये भी अपने साथ क्या लेके आएगा? लिस्ट ऑफ व्हाट? लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसको नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ भी नेम चेंज करना पड़ेगा। LST अकाउंट BEFOR बिफोर इंसर्ट अपडेट, ठीक है। ये इसको नाम, लिस्ट का नाम है, अपन कुछ भी दे सकते हैं। आई नीड टू कॉपी द सेम थिंग, ठीक है। इसको नाम देता हूँ LST अकाउंट्स बिफोर डिलीट, ठीक है। ये इसको नाम देते हैं। चलो, ये मेथड हो गई बन के तैयार। अब आपकी मेथड हो गई है तैयार। अब आप क्या करो, ये पूरा लॉजिक, ये पूरा लॉजिक यहाँ से कट करो, यहाँ ले जाके पेस्ट करो। लेकिन इसको ट्रिगर डॉट ओल्ड नहीं समझता, और वैसे समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो वैल्यू आपने यहाँ ला ली है, राइट। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, उसके पहले ये जो मेथड है इसको कॉल कर दो, अकाउंट ट्रिगर। अब यहाँ पे क्या चाहिए मुझे? क्लास नेम डॉट, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, मेथड नेम ये है, क्लास नेम डॉट मेथड नेम। और जब ये मेथड जा रही है अपने साथ, तो ये अपने साथ क्या लेके जाएगी?
दिस विल टेक ट्रिगर डॉट ओल्ड। ये मेथड जब जारी है तो ये अपने साथ ट्रिगर डॉट ओल्ड लेके जाएगी, ठीक है, सेमी कोड, ठीक है, ट्रिगर डॉट ओल्ड। और यहाँ पे आपने उसे कलेक्ट किया इस पर्टिकुलर लिस्ट कलेक्शन के अंदर, ये मैंने यहाँ, बस हो गया। That's it। दोनों कोड को सेव कर लिया, ठीक है, दोनों कोड को सेव कर, हाँ, एरर चला गया, दोनों कोड को सेव करो, इसको भी सेव करो, इसको भी सेव, हो गया लॉजिक लेस ट्रिगर। दोनों ट्रिगर अब आपके पूरी तरह से लॉजिक लेस है, उसका पूरा लॉजिक जो है आपका वो यहाँ पे। सो दिस इज हाउ this is how we write down this, this is how we write down trigger handler factory। इसको ट्रिगर हैंडलर फैक्ट्री, इन सिंपल वर्ड इट इज कॉल्ड एज ट्रिगर हैंडलर बोलते हैं इसको, और कुछ नहीं। फैक्ट्री वैक्ट्री तो कोई नहीं बोलता है रियल टाइम में, लेकिन अभी वो वर्ड है, तुमको पता होना चाहिए। अभी ट्रिगर हैंडलर के बजाय तुमको ट्रिगर हैंडलर फैक्ट्री बोल दिया तो फिर पता चला कि प्रज्वल अपनी फैक्ट्री के बारे में बता रहा, तो वैसा नहीं होने को ना, इसके लिए तुमको वर्ड बता रहा हूँ। बाकी ट्रिगर हैंडलर ही बोलते हैं उसको, कोई ऐसा अनोखा सा नाम नहीं है उसका, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत थ्योरी है इसके बारे में, देख लो, कुछ एग्जांपल्स और हैं यहाँ पे, प्लीज इसको भी फॉलो कर। तो अरे कहाँ चला गया, ट्रिगर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्लासेस, आई थिंक इतना ही है, थ्योरी नहीं दिया मैंने, ठीक है। चलो, कुछ ट्रिगर्स बेस्ट प्रैक्टिसेस देख लो। सबसे पहले जैसे कि ट्रिगर शुड बी अ बल्किफाइड ट्रिगर, ये हमने बना लिया। बल्किफिकेशन इज ऑलवेज डन विद द फॉर लूप एंड एवरीथिंग, ठीक है। ऑलवेज चेक फॉर द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होता है, ये अपन लिखते हैं ना कि कोई अगर कोई अरे वगैरह अपन यूज करते हैं, इसमें तो नहीं है, बट किसी में अगर अपन कलेक्शन वगैरह में अपन देखते हैं कि वेदर दिस कलेक्शन इज नॉट एम्प्टी है ना, दैट इज ऑलवेज यूज फॉर द नल पॉइंटर। ट्राई कैच ब्लॉक अभी नहीं समझेगा, तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। और इवेंट जो होते हैं, सेपरेट इवेंट लिखा करो ट्रिगर डॉट न्यू के लिए और ट्रिगर डॉट ओल्ड के लिए, एक ही में क्लब मत करो, जैसा मैंने यहाँ पे किया। एक इवेंट है हमारा ट्रिगर डॉट न्यू के लिए, मैंने सेपरेट इवेंट लिखा है, ट्रिगर डॉट ओल्ड के लिए मैंने सेपरेट लिखा है, राइट। तो उसको एक ही में क्लब मत करो, ठीक है। डीएमएल ये जनरल है, डीएमएल को कभी भी लूप में मत लेना, ये आप पहले से जानते हो। एसक्यूएल एसओएसएल जो भी क्वेरी है उसको भी लूप में मत लेना, ये भी आप पहले से जानते हो, ठीक है। ये दो जनरल प्रैक्टिस है, कोई भी, यानी एक ये जनरल प्रैक्टिस है, दिस इज, ये सिर्फ ट्रिगर से रिलेटेड नहीं है, एवरीवेयर वेन एवर यू आर मेकिंग अ प्रोग्राम, डीएमएल को और एसक्यूएल को, कोई भी क्वेरी को, एसओएसएल आप पढ़ने के हो हालांकि, लेकिन पढ़ने वाले हो अभी, तो ये कोई भी जो है ना, हम कभी भी इसको लूप के अंदर नहीं डालने का, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट क्लासेस बनानी पड़ती हैं, टेस्ट कवरेज, ट्रिगर का मिनिमम 1% कवरेज देना पड़ता है, और जो भी आपने क्लास बनाई है, ठीक है, जो भी आपने जो क्लास बनाई है, उस क्लास का मिनिमम कवरेज आपको 75% मेंटेन करना पड़ता है, जो आप देखने वाले। उसके बाद में रिकर्सिव ट्रिगर, एक ट्रिगर दूसरे ट्रिगर को कॉल नहीं करना चाहिए, सब चीजें, ठीक है। और कुछ चीजें जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, सी इट इज रिकमेंडेड टू मेंटेन ओनली वन ट्रिगर पर ऑब्जेक्ट। एक ट्रिगर, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर यूजुअली एक ही ट्रिगर बनाना चाहिए, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी मच नेसेसरी, तभी आप दो ट्रिगर बनाओ, क्योंकि ट्रिगर के एग्जीक्यूशन पे ना अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है। देखो, तुमको मैंने एक चीज बताया कि एज सुन एज यू क्रिएट अ ट्रिगर, आप सेव जैसी करते हो उसको, वो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। आपको प्रोसेस बिल्डर को अलग से एक्टिवेट करना पड़ता है, आपको वर्क फ्लो को अलग से एक्टिवेट करना पड़ता है, बटन से, लिंक से, जो भी है। ट्रिगर का ऐसा मामला नहीं है। ट्रिगर ऐसा शूटर है कि एक बार अपन ने ट्रिगर बना के सेव कर दिया तो वो अपने आप ही एग्जीक्यूट, अभी मैंने इसको सेव किया मतलब ये पीछे में एक्टिवेट हो गया, और इसके एग्जीक्यूशन पे अपना कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए देखो, पहले लेक्चर में भी मैंने कहा था ट्रिगर बहुत सोच समझ के बनाना। आज मैंने लिटरली एक प्रोग्राम नहीं बनवाया तुमसे, क्यों नहीं बनवाया, इसी पॉइंट को साबित करने के लिए कि अगर इफ देर इज समथिंग दैट आई कुड अचीव इट विद एनी अदर लॉजिक, स्पेशली नॉन कोडिंग, तो व्हाई शुड आई राइट डाउन द कोड फॉर दिस, व्हाई एट ऑल इट्स रिक्वायर्ड टू राइट डाउन द ट्रिगर। तुमको प्रैक्टिस करनी है, करो, करना ही है, ये लिखो, ये ट्रिगर तुमको सिर्फ टाइप करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट नेसेसिटी के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि इसके लिए अपने पास में प्रोसेस बिल्डर है, और वो सेम चीज हमने ये सेम लॉजिक प्रोसेस बिल्डर से बनाया हुआ है। तो ये भी एक चीज थी जो मुझे बताना था, दैट्स द रीजन, है ना, तो वो अपने नहीं लिखा। तो चलो, तो जहां जरूरी वही लिखो, एंड इट्स रिकमेंडेड टू मेंटेन द ट्रिगर हैंडलर फैक्ट्री, दैट इज इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कंप्लीट कोड इनसाइड ट्रिगर, वी शुड राइट डाउन द कोड इन अ क्लास। आपको कोड हमेशा एक क्लास में लिखना चाहिए, दैट क्लास इज कॉल्ड एज ट्रिगर हैंडलर क्लास, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ये मैंने आपको दे दिया है, कल जो मैंने ग्रुप में पोस्ट किया है, प्रोबेबली ये वही है, ठीक है, फिर भी पढ़ लें।
The next will be test classes, a new topic. By tomorrow, we will be starting test classes. Test classes खत्म हुआ कि मैं विजुअल फोर्स प्रोग्रामिंग पे आ जाऊंगा. ठीक है, चलो. आई थिंक 2 और 3 टॉपिक्स आर लेफ्ट नाउ, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है. तो एक आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा आपका डेवलपमेंट, और फिर मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दूंगा.